Namaste and welcome to GSR Academy. As government employee, our service conditions are governed by a complex web of rules. On this channel, we explain rules with simple, realistic and practical examples of our day-to-day scenarios so you can apply them with confidence in your professional life. In this video, we are focusing on the concept of half pay leave mean HPL. Please note that the explanations in this video are based on the CCS leave rule 1972 as updated up to 24th September 2024. For your convenience, the link to the official source has been provided in the video descriptions below. I am your host, and today we begin our mission clarity in rules, precision in administration. Let's dive into the facts. The HPL account of every government servant other than military officers and a government servant serving in a vacation department shall be credited with half pay leave in advance in two installments of 10 days each on the first day of January and July of every calendar year. Look what happened. On the January 1st, account is credited with 10 HPL. Same on the July 1st, again account credited with 10 HPL again. So we have 20 days of HPL in our account in every year. Subrule 2, Clause A. The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in the half year of the calendar year in which he is appointed. Let's understand this rule with help of an example. Suppose one government employee join a government job on 10th February. मंथ के बीच में या किसी भी डेट को जब ज्वाइन किया जाता है तो उसे फुल कैलेंडर मंथ काउंट नहीं करते हैं. सो इन सर्विस वो अपना कितना मंथ कंप्लीट कर सकते हैं? ओनली द 4 मंथ्स, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून. सो इन 4 मंथ के लिए उनके अकाउंट में जो HPL जाएगी वो कितना होगा? 4 × 5/3. सो 6.67. 6.67 को जब राउंड ऑफ करेंगे his account is credited by the 7 HPLs. Clause B. The credit for the half year in which a government servant is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation. Understand this example. Look, a employee is retired on 31st October, mean last day of the month. So this month is counted as a complete calendar month. अगर 31st से पहले कभी भी रिटायर हुए होते तो अक्टूबर का मंथ काउंट नहीं होता एज ए completed month. So the completed month of employee is July, August, September and October. Total 4 months completed. For the 4 month, amount of the HPL 4 into 5/3, that is 7 HPL is credited. Clause C. When a government servant is removed or dismissed from service, credit of HPL shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service.
Look in this example. A government servant is dismissed on 28th February. So February month is not counted as per this rule. As per this rule, we count the month completed before the February. So only the January month is counted as a complete calendar month. So for that January, we credit his HPL account by 1 into 5 by 3 mean 2 days. Clause CA. When a government servant dies while in service, credit of HPL shall be allotted at the rate of 5 by 3 days per completed month of service up to the date of death of government servant. This clause inserted इन 2011 बाय ऑर्डर ऑफ डीओपीटी। इसके पहले क्या होता था, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई तो जो प्रीवियस मंथ थे उसी को ही काउंट किया जाता था। अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल, लेट ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइड ऑन 10th मार्च। सो 10th मार्च को डेट उनका डेथ हुआ है, मार्च मंथ इज नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मंथ उनके कौन से होंगे, जनवरी एंड फेब्रवरी। सो 2 मंथ कंप्लीट हुए हैं। फॉर द 2 completed month HPL अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 3 days। वाट हैपन अगर उनका डेथ मार्च के लास्ट डे को होता, मीन 31 मार्च को, या लास्ट वर्किंग डे को होता, तो मार्च का मंथ भी एज ए कंप्लीटेड मंथ काउंट होता, तब उनका अकाउंट 5 HPL से क्रेडिट होता। 2011 के बाद ही ये रूल चेंज किया गया है इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय। ऑल ऑफ यू कैन समराइज these 4 clauses in the case of appointment, in the case of retirement and resignations, in case of removal or dismissal, or in case of death while in service at a glance in a single slide. Clause D. Where a period of absence or suspension of a government servant has been treated as dies non in a half year, the credit to be afforded to his half pay leave account at the commencement of next half year shall be reduced by 1/18th of the period of dies non, subject to a maximum of 10 days. Why the 10 days? Because employee is eligible only for the 10 HPL advance credit. Look this example. In the previous half year, an employee is on 126 days period dies non. So as per the rule, these 126 days multiplied by 1 by 18 converted into the 7 days mean in the next half year. नेक्स्ट हाफ ईयर फॉर एग्जांपल इफ स्टार्टेड विद द 1 क्या होता है, हम लोग उनको 10 डेज का फुल HPL देते हैं, बट ड्यू टू द डाइज नॉन पीरियड वी सब्सट्रैक्ट और रिड्यूस द 7 डेज ऑफ HPL। नाउ हिज लीव अकाउंट is credited by only the 3 days HPL. Look in this picture. अगर 36 डेज के लिए डाइज नॉन है तो 2 दिन का रिडक्शन करेंगे, उनका HPL अकाउंट 8 डेज से क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर 90 डेज के लिए डाइज नॉन है तो 5 दिन कम कर देंगे और उनका HPL अकाउंट ओनली फॉर द 5 डेज HPL क्रेडिट होगा। अगर एम्प्लॉय 198 डेज के लिए डाइज नॉन हो गए तो 1/18 रूल के अकॉर्डिंग उनका 11 डे रिड्यूस होना चाहिए, पर एज पर रूल हम मैक्सिमम 10 डेज ही रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय को 10 HPL ही एडवांस में क्रेडिट दी जाती है। सो एज पर रूल उनके लीव अकाउंट में 0 डेज HPL क्रेडिट होगा। लुक ऑन अनदर एग्जाम्पल। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं।
जहां पर CCS लीव रूल 1972 फॉलो अप होता है। 1 जुलाई 2025 को उनके अकाउंट में 100 डेज का EL और 72 डेज का HPL है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 25 तक क्या हुआ कि उन्होंने EOL ले लिया 100 डेज का, और 36 डेज के लिए वो डाइज नॉन हो गए। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ EL एंड HPL एज ऑन 1 जनवरी 2026। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए। देखिए 1 जुलाई को उनके पास में 100 EL है और 72 डेज का HPL है। मीन यहाँ पर आपको 15 डेज का EL और 10 डेज का HPL एडवांस नहीं डालना है, बिकॉज 1 जुलाई को ये हमें बता दिया गया है कि 100 डेज का EL है, 72 डेज का HPL है, क्रेडिट करके ही बताया गया है। अगर ऐसा बोला जाता कि बिफोर 1 जुलाई 100 डेज है और 72 डेज HPL है, तो हम क्या करते क्वेश्चन में, प्लस करते 15 EL और 10 HPL को। इनकी सर्विस में क्या हुआ था, जो प्रीवियस 6 मंथ में था, 100 डेज के लिए क्या हो गए थे, ये EOL पे थे, और 36 डेज के लिए डाइज नॉन थे। फर्स्ट भी कैलकुलेट EL। 1 जुलाई 2025 को उनके पास EL है 100। जो पीरियड उनका रिडक्शन के लिए काउंट कर रहे हैं वो कौन सा है, 100 डेज का EOL और 36 डेज का डाइज नॉन पीरियड। एज पर रूल 27 सब रूल 3 टोटल पीरियड हो गया हमारे पास में 136। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें कितना रिड्यूस करना है, 1/10। सो 14 डेज हम रिड्यूस कर देंगे। एडवांस में हम लोग कितने क्रेडिट करते हैं हाफ ईयर में, 15 डेज। रिड्यूस कितना करना है, 14। सो रिमेनिंग डे इज द 1। सो 1 जनवरी को क्या होगा, 100 + 1 टोटल 101 डेज का उनके अकाउंट में EL बैलेंस होगा। नाउ वी कैलकुलेट फॉर HPL। ओपनिंग बैलेंस HPL का उनके पास में कितना था, 72 डेज। पीरियड कौन सा कंसिडर करना है रिडक्शन के लिए, ओनली द 36 डेज, द डाइज नॉन पीरियड। यहाँ EOL वाला पीरियड काउंट नहीं करना है एज पर रूल 29(1)D। तो 36 का 1/18 करेंगे, कितना होगा, 2 डेज। HPL एडवांस में हम लोग क्रेडिट करते हैं 10 डेज का, 2 दिन को रिड्यूस करना है, सो 8 डेज हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो ऑन 1 जनवरी 2026 कितना होगा उनके अकाउंट में, 72 + 8 टोटल 80 डेज HPL। सब रूल 3, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव अंडर रूल 49 shall be entitled to HPL of 20 days on completion of 12 months of actual duty। देखिए डिपार्टमेंटल लीव क्या होती है कि वो एज ए ड्यूटी काउंट नहीं होती है। अगर एम्प्लॉय ने पूरे 12 मंथ वर्क किया है तो उसका लीव अकाउंट 20 डेज के HPL के साथ में क्रेडिट हो जाता है। ये रूल किस पर लागू होता है, क्लास 3 एंड क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जिनका काम क्या है, वो सर्वे पार्टीज के साथ फील्ड में जाते हैं सर्वे करने के लिए। ये रूल और किस पर लगता है, मेंबर ऑफ द सीजनल स्टाफ इन द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट whose duties are not continuous but are limited to certain fixed period in each year। उन्हें आजकल हम लोग जर्नल नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाक सेवक। लुक, ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिपार्टमेंटल लीव के लिए एलिजिबल है एज पर द रूल 49, अगर उन्होंने 12 मंथ का अपना ड्यूटी कंप्लीट किया है तो उनका HPL अकाउंट 20 डेज HPL के साथ क्रेडिट कर दिया जाता है। सब रूल 4, द लीव अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑन प्राइवेट अफेयर। क्या तो आप HPL मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में ले सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी पर्सनल काम जैसे घूमने जाना हो, फैमिली को टाइम देना हो, या आपका कोई और काम हो, उसके बिहाफ पर ले सकते हैं। सब रूल 5, वाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव
fraction of a day shall be rounded off to the nearest day. क्या करना है, अगर 0.5 या उससे बड़ा हो तो हम उसको फुल वन डे मान लेंगे, और 0.5 से अगर कम है तो उसको पूरा वन नहीं मानते हैं, जीरो कर दिया जाता है. So that's bring us to the end of our deep dive into HPL. Understanding Rule 29 ensures that your HPL is credited correctly and managed without any administrative hurdles. Don't forget to check the description box for the official link to the CCS Leave Rule 1972 updated as on September 24, 2024. Thank you for watching. Remember, clarity in rules, precision in administration, professional excellence. I will see you in the next video. Jai Hind.